Hello friends, good evening all. This is me, Dr. Koles. I am a practicing veterinary surgeon under Government of Odisha. In continuation with this series on Governor General of Bengal during the East India Company's rule, in this YouTube lectures we will deal on Lord William Bentinck, who assumed the charge of Governor General of Bengal in the year 1828 and served for 7 years till 1835. So dear friends, जिते बड़ा आमे देखिचंदी पूर्व वीडियो रे देखिचंदी जिते भी गवर्नर जनरल बंगाल इंडिया को आछंती ड्यू द कंपनीज रूल समस्त गोटे कॉमन थिंकिंग कॉमन आइडियोलॉजी कॉमन मोटो थिला कि आमे इंपेरियलिस्टिक हबा बाय आवर फॉरवर्ड पॉलिसी माने आमे बहुत सारा ब्रिटिश किंगडम रे बहुत सारा प्रोविंशियल स्टेट की प्रिंसली स्टेट को आमे एनेक्सेशन करिया जोड़ी देबा सो दैट आवर ब्रिटिश एम्पायर विल बी एनलार्ज एंड आमे गोटे होल इंडिया रे हमर टेरिटोरी आमे एस्टैब्लिश करि परिबा सो जते गवर्नर जनरल बेंगल थिले समस्त प्राइम मोटो इंपेरियलिस्टिक पॉलिसी ही थिला किंतु जण गवर्नर जनरल ऑफ द बेंगल थिले जे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक से तांकर एसो चिंताधारा नथला से तांकर मूल ही नॉन इंपेरियलिस्टिक नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी से एंड नॉन एग्रेशन पॉलिसी से अडॉप्ट करथिले so he was an exception from all the governor generals of the Bengal. Lord William Bentinck पूर्व 1803 मसीह भी मद्रास प्रेसिडेंसी रे गवर्नर थिले जेतरा 1806 मसीह रे आमे जानते भेलोर म्यूटिनी सिपी म्यूटिनी हितला 1857 रे ता आगुर रे भेलोर म्यूटिनी हितला अगेंस्ट द ब्रिटिश administration misadministrations okay the Vellore mutiny एटा हम पढिबा नेक्स्ट क्लास रे जानि थांदो Vellore mutiny काहे कराला जे कि ए Vellore mutiny तो सिपाही माने जो से जो वार रे जो माने एंगेज थिले तांको कुआ गला कि तमे ब्रिटिश कस्टम्स पिंदो तो से जो सिपाही माने साउथ इंडियन सिपाही माने ना 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 आमे ब्रिटिश ड्रेस सिपाही ड्रेस पिंदिबोनी please allow us to wear our own ethnic dress. That's why the mutiny was came into effect. That's it's popular known as the Vellore mutiny, and this Vellore mutiny was happened during the period of Lord William Bentinck when he was the governor of the Madras presidency. After winning the Vellore or after suppressing the Vellore mutiny, then the crown or the British government कहले ना तुम तो भलो काम करलो then he again recalled for the post of governor general of the Bengal in the year 1828 जदि आमे देखिबा लॉर्ड विलियम बेंटिक से प्रथमे जे ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हेले से आगर गोटे ब्रिटिश ट्रूप रे गोटे साधारण सोल्डर हिसाब रे से जॉइन करथिले he was such a charismatic person, so influential person. से तापर से soldier member of the parliament को से promotion होइतिले. Finally to the governor of the Madras presidency, then to the William Bentinck. तो 1828 मसीहा बेलको तांको हाले 29 इयर्स हितला. भाबंतु केते यंग स्टेज रे से तांको गवर्नर जनरल बेंगल रे रेस्पोंसिबल गुड अकाउंटेबल पोस्ट को तांको से ब्रिटिश क्राउन पठेतला कि मिस्टर विलियम बेंटिक यू गो एंड ब्रिंग सम द रिफॉर्म मेजर्स इन द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशंस जेतरा से आसिले विलियम बेंटिक से जनरली ही इज वेल नोन इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया फॉर हिज नॉन इंटरवेंशन नॉन एग्रेशन एंड नॉन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी विथ द प्रिंसली स्टेट ओके इंडियन स्टेट्स से कहले मु इंडियन स्टेट को सहित कोनोसी मोर एग्रेशन देखेबार नै कोनोसी मु एनेक्सेशन करबिनी मींस नो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी मु अडॉप्ट करबिनी हला नो एग्रेशन करबिनी अलगा को स्टेट को सहित इंटरनल अफेयर्स सहित मु किछि करबिनी एंड कोनोसी इंटरवीन भी तांकर किछि अफेयर्स कर किछि मैटर्स सहित मु ये माने मु करबी नाही से खाली से दीटा केस रे से गोटे हितला हमर मैसूर वार रे आ गोटेला जयंती इशू रे सिख जोटा कि लोक मानकर समर्थन बल रे से देशर से राज्य को
ଆନେକ୍ସେସନ୍ କରିଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ୱିଶ୍ରେ। ଏଗେନ୍ ସିଏ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ମହୀଶୂର ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ପଢ଼ିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦି ମହୀଶୂର ଇସ୍ୟୁ ହାଉ ଦି ମିସ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଇରପ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦି ମହୀଶୂର କେସ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଉ ହି annexed the Mysore's kingdom into the British Empire. କିନ୍ତୁ ସେ ଟୋଟାଲି ଫର୍ ନଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରେସନ୍ସ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ସ ଫରୱାର୍ଡ଼ ପଲିସି ଏକ୍ସପାନ୍ସିଓନିଷ୍ଟ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼ ନଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆସିଲେ ଟିପୁଙ୍କ ପରେ ଆମର ସେଇ ମହୀଶୂରକୁ ଦିଆଗଲା ମାନେ କୃଷ୍ଣା ମୁଁ ସେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବି କୃଷ୍ଣା ରାଜା 3 ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ବୟକୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା କାହାର ମହୀଶୂରର ରାଜା ହିସାବରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କୃଷ୍ଣା ରାଜା 3 ଛୋଟ ଥିଲେ 12 to 13 ଇୟର୍ସ ତାଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ହେଲେ ଦେଖାଗଲା କି କୃଷ୍ଣା ରାଜା 3 ୱାଜ୍ ଇନକାପେବୁଲ୍ ଅର୍ ଏ ରୁଲର। ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଓ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ପରିଚାଳନା କରିପାରୁନଥିଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏନ୍ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦି ପିଜେଣ୍ଟସ୍ ସବୁ ଶ୍ରମିକ କୃଷକ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଦେଖାଗଲା ଦେୟାର ଇଜ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଦେଖାଗଲା ଅପୋଜିସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଏଗେନଷ୍ଟ ବହୁତ ଦେଖାଗଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ହି ସେଡ୍ ମିଷ୍ଟର ବେଣ୍ଟିଙ୍କ୍ ସେଡ୍ ସାର୍ ମାର୍କ କ୍ୟୁବନ୍ କି ୟୁ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ସପ୍ରେସ୍ ଦି ଇସ୍ୟୁ। ସୋ ମାର୍କ କ୍ୟୁବନ୍ ଗଲେ ଏ ମହୀଶୂରରେ କୃଷ୍ଣ ରାଜାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାକୁ କହିଲେ ନା ୟୁ ଆର୍ ଇନକାପେବୁଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମେ ଆମ ସହିତ ମିଶିଯାଅ। ତାପରେ କ'ଣ କଲା କୃଷ୍ଣ ରାଜାଙ୍କ 3କୁ ସେ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା ସେ ମହୀଶୂର କିଙ୍ଗରୁ ତାଙ୍କୁ ପେନସନ୍ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଦିସ୍ ମାର୍କ କ୍ୟୁବନ୍ ସାର୍ ୱାଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଏ କମିଶନର and who was handling all the matters of the Mysore empire. ଆଉ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା କାଖାର ଆଉ ଜୟନ୍ତିଆ ଇସ୍ୟୁ। କାଖାର ଆଣ୍ଡ ଜୟନ୍ତିଆ ଇସ୍ୟୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଲା ଏଇ ଦୁଇଟା ଜାଗା ଆମର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଏରିଆରେ ଅଛି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମାନେ ବର୍ମି ଜୁଆର ଆପଣ ସେ ଇସ୍ୟୁ ପଢ଼ିବେ ବର୍ମି ଜୁଆର ଚାଲିଥିଲା ସେଟା ବର୍ମା ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ପାର୍ଟସ୍ ସବୁ ନିଜର ଆନେକ୍ସେସନ୍ କରିବେ। ଏଇ କାଖାରର ଯିଏ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ନିଜକୁ ଆସାସିନେଟ୍ କରିଦେଲେ ନିଜକୁ ସେ ମର୍ଡର କରିଦେଲେ। ମର୍ଡର କଲା ପରେ କ'ଣ ସେଠିକା ଲୋକ କହିଲେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ପିପୁଲ୍ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆନେକ୍ସ ଆୱାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁ ୟୋର ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଏମ୍ପାୟାର। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ସେ କାଖାର ଏରିଆକୁ ସେ ନେଇଥିଲେ। ଓକେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟି ହେଇଥିଲା ଏ କାଖାର ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ୟାଣ୍ଡାବୁ in 1832. Okay, Treaty of Yandabu in which the Kakhar area of the northeastern area was annexed to the British Empire. Like that, the Jaintia state also annexed to the British India. Okay. Another issue was that there is a very good friendship. ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆର ପଞ୍ଜାବ ଆଉ ଗୋଟେ ସିନ୍ଧ ହେଲା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା। ସେଟା ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିକ୍ ୱାଜ୍ ଦି ଫାଷ୍ଟ ଯିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଦି ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ ଅର୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଦି ବେଙ୍ଗଲ ଯିଏକି ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ଦି ଥ୍ରିଟ୍ ଅର୍ ଦି ଇନକମିଂ ଥ୍ରିଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ରେଞ୍ଚ। ओके सी फ्रेंच पीपुल मानकर से थ्रेट को से फास्ट से अनुभव कर पार्थिले। दैट्स व्हाई जतले फ्रेंच माने अटैकिंग करिवे कोप टू अटैक करिवे सेटा गोटे ही पास थिला ओनली दिस अफगानिस्तान पास। ओके ए पास रो से अटैक करिवे। दैट्स व्हाई ही मेड दिस अफगानिस्तान ए बफर एरिया। ओके इन ऑर्डर टू चेक the growing menace of the French people in order to avoid the future combat. Okay तेणु ए अफगानिस्तान एरिया को जदि से बफर करिया बोले तो से ए पंजाब और सिंध एरिया जो रूलर थिले जे किंग थिले तांको से वेरी गुड रिलेशनशिप से गोटे एस्टाब्लिश करथिले। पंजाब से राजा थिले राजा रणजीत सिंह। ओके बेंटिक तो ये शासन करथिले बेंगल तो सी कौन कहले देखाई बहुत सी
गिफ्ट्स पठेले तांको भीतर कोरिया रिलेशन से एस्टाब्लिश करिया को ट्राई करते से फाइनली से सक्सेस भी से हेइतिले ओके राजा रणजीत सिंह एते खुशी हो तांको भीतर एते तांकर भीतर कोरिया रिलेशन डेवलप ला जे से माने गुटे ट्रिटी साइन कले कोन ट्रिटी साइन पई कोन पई कले कि आमे सतलेज नदी ऊपर फ्री नेविगेशन करिया ये ब्रिटिश आर्मी एज वेल एज द soldiers of my Punjabi state. Okay, that treaty is known as Indus Navigation Treaty. That Satluj a treaty where Satluj नदी ऊपर there will be free trade between by the both sides. Okay, this is the similarly से similar treaty करते the king of Sindh regions. Okay, so Raja Ranjit Singh and the Lord William Bentinck they made a collaborative effort in order to check the growing menace of the French by making a buffer region in the region at Afghanistan. So this is ever remembered. Okay, next is issue आम गोटे पढ़ी जिते 1717 थर्ड आप मन थी 1717 थर्ड कौन करते जब मन ना आप प्लीज गो टू माय वीडियो जोटी कि मुझे 1770 थर्ड चैप्टर एक्ट ऑफ 1770 थर्ड एंड पीट्स इंडिया एक्ट जो पढ़ी एक्चुअली लेक्चर 2 ना लेक्चर 3 होता मोर मन पड़े एक्जाक्टली से वीडियो देखते प्रथम जा चैप्टर एक्ट 1773 कौन कर मिस गवर्नेंस चलला जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो देवालिया स्थिति आसला डेट रिडन कंडीशन आसला से 1773 एक्ट पास कराइला जोटा कि ब्रिटिश क्राउन टुक द कंट्रोल एज वेल एज रेगुलेटरी मेजर्स ऑफ द कंपनी अफेयर्स ओके 1773 रे आ गोटे यूनानिमस रिजोल्यूशन पास कला इन एवरी 20 इयर्स ओके रिमेंबर इन एवरी 20 इयर्स आमे देखियो कि कंपनी रो अफेयर्स को चेक करू कंपनी रो कौन चलची कौन तार रिफॉर्म मेजर्स एवरी एस्पेक्ट्स आमे डील करू एंड दिट इज मैंडेटरी सेमिति आसला 1833 रे गोटे चैप्टर एक्ट आस्तिला ओके जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर एक्ट मन रखिबे ए चैप्टर एक्ट ऑफ 1883 आल्सो नोन एज सेंट हेलेना एक्ट of 1883 ओके एथरे से कहूँ इन 1883 से कह गला से केते प्रोविजन्स थिला सी प्रोविजन्स कराला किछ आर्ट ची चैप्टर पर किछ प्रोविजन्स करा जो ओके प्रोविजन्स रे कह गला कि इट लॉर्ड विलियम बेंटिक को कौन कहा जाला प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम पर ना 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 तुमको से नारा डका जीवन मिस्टर बेंटिक तुमको बर्तमान डेजिग्नेशन चेंज कर दिया तुम नाड़ा बर्तमान करा जो गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया बहुत टाइम परीक्षा रे पड़े सो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन द इट वाज मेड प्रोविजंस अंडर चैप्टर एक्ट ऑफ 1833 and William Bentinck happened to be the first governor general of the British India. Okay, second thing गवर्नर जनरल गोटे काउंसिल से आम पूर्व वीडियो पढ़ी कि तांको से एड एंड एडवाइस करियो ताको सब प्रकार हेल्प करियो से काउंसिल से गवर्नर जनरल को गोटे लॉ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट करा गला ओके लॉ मिनिस्टर को अपॉइंट करा गला and that law minister for the first time was Macaulay. Okay, chapter 1833 कहला कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जोटा कि पूर्वर कह होता कि ये गोटे कमर्शियल एजेंसी ओके से कमर्शियल एजेंसी डेजिग्नेशन उठेगला क्राउन कहला ना 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 तुम कमर्शियल एजेंसी की रही नाउ यू विल एक्ट एज ए पॉलिटिकल एजेंट ऑफ द क्राउन. So your designation from a commercial agency has been changed to a political agency of the crown. Okay, this is commercial agency
ता टैगलाइन उठी जाए कि कौन तक कहला पॉलिटिकल एजेंसी. Another provisions were there. There is a Indianization. What लिखिबे एटा सब परीक्षा में सब लिखिबे. Indianization of public services. How do you mean Indianization of public services? पूर्वर को होतला कि जत्ते बडा कंपनी रे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जत्ते चाकरी दिया होतला पूर्व जनरली ब्रिटिश पीपल को ही बेसी प्रायोरिटी दिया होतला. नो इंडियंस आर एंगेज्ड एट द हायर पोस्ट or the governing or the decision making post like this official high level officials post. See Charter Act 1833 कहले ना तुमको बर्तन irrespective of any race, creed, your place of birth, color, you have to give priority to the Indians. Okay, this is known as Indianizations of public services. So this Charter Act, again I am repeating, the Charter Act of 1833, which was enacted in 1833 as a mandatory guideline from the Charter Act of 1773, was also known as St. Helena Act of 1833. Under this act, the provisions like the designation of the Governor General of the Bengal was changed to the Governor General of the India, and William Bentinck was happened to the first Governor General of the India. Then there was an appointment of Law Minister in the Governor's Council, and T.B. Macaulay was the first Law Minister. Then the British Crown ordered, or the British Crown told कि मिस्टर की ईस्ट इंडिया कंपनी previously you are designated as the commercial agency of the crown, now you will be regarded as, or you will be treated as the political agency of the crown. Next one is the Indianization of the public services, irrespective of creed, color, place of birth, caste, all these things. Then the Indians will be given priority in the matter of the public services of the company. So all the four things are known as utilitarian philosophy of Bentham. Utilitarian philosophy of Bentham. Okay, एटा गोटे फिलोसफी गोटे कॉमन सेंस अच्छी यूटिलिटेरियन फिलोसफी ऑफ बेंथम अंडर रे चार्टर एक्ट 1833 आउची. ऑल द फोर प्रोविजन्स आर एनसाइंड. वर्तमान देखिबा हमर तांकर सब कोन कोन रिफॉर्म्स आस्ताला. हम मेनली रिफॉर्म्स ऊपर करते. पूर्व में कहितली बेंटिक सर से जन ताकर नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरवेंशंस, नॉन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी से अडॉप्ट करते. दैट्स व्हाई ही वाज ए वेरी लिबरल गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल. ओके, देखिए फाइनेंशियल जिनस से कौन करते सी तो गवर्नर जनरल बेंगल से चार्ज नहीं से देखी कंपनी बहुत डिस्ट्रेस रे मूव करता. दैट इज ए ह्यूज डेब्ट, आल्सो डेब्ट रिलेटेड कंसर्न आल्सो कंपनी मूव करता. फाइनेंशियल साउंडनेस भल नथिला. दैट्स व्हाई इन ऑर्डर टू चेक द प्रॉब्लम्स से फास्ट कौन कले हायर ऑफिशियल्स सब कंपनी चाकरी करते सैलरी को से रिड्यूस करते. ओके, सैलरी रिड्यूस करदे. अगेन बहुत अलाउंस दिया होता ऑफिशियल्स मान को. से अलाउंस गुड़ा कौन करागला ताकू से कमे दिगला और टोटल से बहुत क्षेत्र एबोलिश भी कर देगले. सैलरी रिडक्शन प्लस एबोलिशंस ऑफ अलाउंसेस. आ गोटे से इंपोर्टेंट से फाइनेंशियल कन्स्ट्रेंट्स को डील करने नहीं थे कि जो सब सैनिक मैंने सब लड़ुले दो सिपाहीज हु आर फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी गोटे डबल भत्ता गोटे मिलूला है. डबल भत्ता सिस्टम को सी बंद करदे. डबल भत्ता सिस्टम. सो दिस इज द फाइनेंशियल रेमेडीज और द रेमेडीज पर्टेनिंग टू द फाइनेंशियल थिंग्स ही आर टेकन. Another thing is the administrative reforms. Administrative level से कौन नेले. ओके, फर्स्ट ला जो हमरो हेतिला लॉर्ड कॉर्नवालिस
पूर्व भिडियो देखंतु लॉर्ड कॉर्नवालिस कर कॉर्नवालिस आम दीटा टाइप कोर्ट से एस्टाब्लिश करते गोटे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब आप चैलेंज करेंगे एट हायर कोर्ट दैट इज द अपीलेट कोर्ट एट द प्रोविंशियल लेवल जो से तैयारी करते तो अपीलेट कोर्ट से ना 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 आई एम एबोलिशिंग द अपीलेट कोर्ट सिस्टम फर्स्ट सेकंड थिंग इज देयर वर्नाकुलर लैंग्वेज को से यूज कले कोर्ट जुडिशियरी रे यूज कले कहीं कॉमन पीपल साधारण लोकंकर दैट वाज आउट ऑफ रीच आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पर्शियल लैंग्वेज पूर्व कौन करा होतला सब कोर्ट रे पर्शियल लैंग्वेज यूज करा होतला हला से कौन कले ना 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 वर्नाकुलर लैंग्वेज निज लोकल लैंग्वेज यूज हो एट लोअर कोर्ट आउ इंग्लिश लैंग्वेज यूज व्हाट हायर कोर्ट राइट थर्ड थिंग होची से परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को से एक्सटेंड करैले कुआडे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस पटो से नेले ओके द एक्जिस्टिंग सिस्टम द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट वाज एक्सटेंडेड टू द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड आरएम बार्ड एटा बहुत टाइम परीक्षा रे पड़े RM Bard was given the charge of the Permanent Settlement Act, which was extended to the northwest area for the period of 30 years. Okay, 30 years में से Permanent Settlement Act को से extend कर दिले. Another is social reforms. इटा कि जोड़ा कि very very important. जहाँ को कि Lord William Bentinck is Lord William Bentinck is known as maker of modern India or father of modern India by his very important social reforms. कौन social reforms देखिए बर्तमान social reforms तीन social reforms abolition of SATI suppression of thugs prevention of female infanticides जोटा कि सोशल रिफॉर्म्स अंडर आसुचे एबोलिशन ऑफ सती कौन पूर्वर करा होतला जनरली एबोलिशन सती कांसेप्ट कोड होतला बंगाल रे से तले गवर्नर जो बंगाल से थिले गवर्नर इंडिया से थिले से देखुतले से त बहुत 800 1000 केस तांको पाकु आसिला कौन केस आसिला नाही धर गोटे जगार स्वामी मरी जाऊँगी स्वामी मरवा सहित तार जो स्त्री जी विधवा स्त्री को भी स्वामी सहित तार चित्तारे ताको नियारे पड़ी दिया होची द विडो वाज बर्न अलिव ड्यूरिंग दैट कंडीशन सो दिस इज ए सोशल टैबू दिस इज सोशल सुपरस्टिशंस से कहले एक ही सिस्टम्स ना 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 ये सब सिस्टम्स बंद होगा दरकार दैट्स व्हाई ही टुक ए वेरी बोल्ड स्टेप वेरी coercive state in order to check the growing menace of the sati systems. Okay, so yes, स्वामी था तो पूरे जीवन तो लोग स्त्री को जाड़ that is a what that is a barbaric types of activities. That's why से गोटे order promulgate कले. Okay, government order इना मन रखी दो XBIA of 1829 केबे ऑर्डर कले 4 डिसेंबर 1829 एट ऑर्डर कले ना 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 आई एम टोटली एबोलिशिंग दिस सिस्टम ऑफ सती and those people who are engaging or who are practicing this sati they will be thrown to the bar and the stringent action will be initiated against him or her. That's why the abolition of sati was a remarkable or it was a historical reform measures taken by the William Bentinck, and during that period also Raja Ram Mohan Rai also helped him in this to eradicate this type of taboo, social taboo. Okay, then suppression of thugs. Thugs कौन चोरो चोरो जहाँ को पजे चोने माने बाप चोरी करतला पो चोरी करो नाती भी चोरी करो इट्स ए हेरिडिटरी थिप्स देयर एक्चुअली एमाने कोन करूतले हला एमाने कोन करते जतला
पूर्व लोक मैंने कौन घर बाहर तीर्थ स्थान जाऊे कि ट्राभेलिंग करुले आजिका डेट किसी पुलिस सिस्टम स्ट्रंग थिला ना कम्युनिकेशन वेल डेवलप थिला किसी नथिला तो एमाने कौन करथिले छपिक रहउथिले आउ एमाने पीसफुल मार्चर्स और पीसफुल पिलग्रिमेजेस कि ट्रावेलर्स को से लूट्स करुले दि थग्स है से टाइम रे विलियम बेंटिंक को टाइम रे से पठेले कॉलोनेल स्लिन ओके सॉरी स्लीमान कॉलोनेल स्लीमान को से पठेले कि मिस्टर स्लीमान यू गो प्लीज स्टॉप दिस न्यूसेंस क्रिएटेड बाय द थग्स एंड कॉलोनेल स्लीमान कौन कले एमान को बाय कोएर्सिव एक्शंस पुलिस फोर्स लोग ये सब थग्स सिस्टम को से टोटल से सप्रेस कले ए चोर मान भीतर से केते जन एग्जीक्यूट करदेले केते जन को अंडमान पठेदेले कहले तुम जा अंडमान चोरी करियो ओके मजा कर कहूँ अंडमान को पठेदेले से एमिति उपाय से करके से बहुत थग्स को से टाइम रे सप्रेस करते एंड द होल क्रेडिट वाज went to the Mr. Bentinck. That's why Colonel Sliman, also known as Thugs Sliman. ना से एमती चोर को हैंडल तांको भी से चोरों को खतरों का खिलाड़ी जिंदगी खुआ जाए खिलाड़ी का खिलाड़ी सेमती थग्स स्लिम ताको स्लिमान ताको एबे भी हम इंडियन हिस्ट्री ताको कुआ होची एकेन आ गुटे से करतले very important जिंस द प्रिवेंशन ऑफ फीमेल इन्फांटिसाइड्स पूर्व कौन करा कन्या शिशु जन्म होता मार दिया होता कि इनसाइड दि वूम मदर्स वूम ताको से डिस्ट्रॉय कर दिया होता ना ना से सब जिनस इट्स अ सोशल टाबू माने पुओ हो कि झी हो सेटा तो दैट इज ऑलरेडी डिटरमाइन द नेचर्स योर हेरिडिटी ओके सो पूर्व स्टिग्मा थले एबे भी स्टिग्मा बहुत गुडे प्रोविंसेस हमर इंडिया जिंति रहउची तो सेते गवर्नमेंट बहुत गुडे इनिशिएटिव्स नो जेंति कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम वर्तमान ये सब माने फीमेल इन्फेंटिसाइड्स आईन अनुसार देखा पीसीपीएनडीटी एक्ट प्री कन्सेप्शन प्री नाटाल डायग्नोस्टिक एक्ट इन सब रहउची जोड़ा एबी भी चल बेबी भी हम इंडिया रे मेन कॉज ऑफ कंसर्न्स इन द फर्स्ट माने सेटा को हमर विलियम बेंटिक सेटा को आइडेंटिफाई करथिले पर ना ना आई एम कंडेमिंग दिस प्रैक्टिसेस ऑफ killing the female infants. Okay, next thing is this is social reform. Another thing is education upare se madhya very importance se deitile education upare setme se committee establish करथिले under the leadership of मैकुले देखो मैकुले कौन करथिले जेतो कमिशन से हेड थिले तो मैकुले किछि रेकमेंडेशन देथिले टू द बेंटिक कौन को से कौन रेकमेंडेशन देथिले से कहले द यूरोपियन लिटरेचर्स एंड साइंसेस रिमेंबर द यूरोपियन लिटरेचर एज वेल एज साइंसेस मस्ट बी रेड इन इंग्लिश लैंग्वेज टू द इंडियन स्टेट्स okay the European culture the European literature and the European sciences must be read or must be taught in English medium to the people of India. That's why government resolution कले that's why मैकुले कौन माने जदि मोटा मोटी भाव देखिए से इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करिया से रेकमेंड करथिले. That's why in the सेथि में governor's resolutions on 1835 रे गोटे गवर्नमेंट तटे प्रेस रिलीज कले कि इंग्लिश shall be treated as official language as well as literary language of India. Okay, 1835 रे गवर्नमेंट resolutions रे कुआ गला English shall be treated as the officials as well as literary language of India. Okay, so these are the reform measures taken by the Lord William Bentinck during his tenure. Let's to recap. आमे सब कौन पढ़ले. So first the Bentinck's basic attitudes towards the reforms. कौन non interventions, non aggressions,
non-forward policy or non-expansionist policy. Second, his policy toward the Indian states. Already I have discussed. The cordial relations with the Raja Ranjit Singh by signing the treaty of Indus Navigation Treaty. Okay, as well as with the king of Sindh also. Second, the Charter Act 1833, which is known as the utilitarian philosophy of the Bentham. Okay. Next, the Bentinck's financials and the administrative reforms like curtailing the salaries, the abolishing the double bhatta systems in administrations, abolishing the higher court of appeals. Okay, all the things here, in the encouraging the vernacular language at the lower district and the English at the higher district courts by totally abolishing the Persian language. Okay. Next, his social reforms, the abolition of SATI, suppression of thugs, and the prohibition of the female infanticide systems. Finally, the reforms measures on the educations by he adopted the recommendations of the Lord Macaulay, that is known as the Macaulay Minutes, okay, in which he had suggested to give teaching in English language about the European literature as well as the European sciences. Okay. Finally, overall, he is a very good Governor General of the Bengal. He is still in the heart of millions of people of the India. And ତାଙ୍କର जो से रिफर्स मेजर से आनी जो सती सिस्टम को आबोलिशन कर 1829 मसीह डेट मन रखिए 4/1829. ही स्टिल नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया और द मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया. सो दिस इज मच फॉर टुडे. इफ यू लाइक माय वीडियो, please do it like, do it share and subscribe my channel and press the bell icon to get the early notifications. Till the next video, God bless. Thank you. Good night.